डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन टूटता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है. सो यहाँ पर एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन था. हाउ डिड आई कनेक्ट दिस? मार्केट में ये एक लेवल था, मार्केट में ये लेवल था. सो व्हेन टू लेवल्स कनेक्ट ऑटोमेटिकली बाकी सब लेवल्स कनेक्ट हो जाते हैं. सो ये ट्रेंड लाइन था. द मार्केट वाज नॉट एबल टू गो अबव दिस, बट द मोमेंट मार्केट गिव अ ब्रेकआउट, अब यहाँ ऑब्जर्व करो, यहाँ पर मार्केट्स गिव अ ब्रेकआउट. So we are not going long over here, because if we are going long at 3680 on this candle, our SL will come over here. हमारा stop loss will go below that candle because ये immediate breakout है. So when did we go long? ये देखो, market breaks out, halt candle and then breakout bar. So this over here that I have encircled is an inside candle breakout. Market breakout किया, halt किया, it is giving time for fresh people to enter. वहां पे एंट्री हुई और उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया. स्टॉप लॉस क्या आएगा? एंड मार्केट आउट फॉर यू. स्टॉप लॉस आएगा, एंटर कब करेंगे? नाउ द क्वेश्चन that you should be asking me is, Devang, where do I enter? Because in this scenario जो आपका ये halt candle है, no doubt इसका वॉल्यूम लो है, बट जो ये halt candle है, इसका जो wick है, इसका shadow है, it is going above the mother bar. So is it a inside candle? Yes, it is. See, by theory, in theory, the candle, the halt candle should be contained within that mother bar. But in practical application, you can always have some kind of deviation from theory. So as long as it is a low volume candle, as long as the body is contained within the mother bar, and I would say as long as it is a doji, it doesn't matter to me, and I would say it still qualifies as an inside candle. So when can I enter? One thing is, if you are a risky trader, then you will enter on this line. जो हमारा mother bar है, जब उसका प्राइस टच हो रहा है, then we will start to go long. But if you are a cautious trader, then when the high of the doji, when that starts to break, then you will go long, because हम हाई पे टूट के ब्रेक करते हैं. So let us say आप यहाँ पे एंटर करते हो, आपका स्टॉप लॉस क्या आएगा? आपका SL आएगा just below the breakout bar. ये आपका SL आएगा. If I go to that long and short tool, click on this option, go on the long position. You are going long over here. आपका SL क्या है? Literally anything. Just SL is आपका around 30 rupees, and look at how much the markets have expanded. It's given you more than 7:1 on the reward to risk side. So this is what I'm saying. If you want to learn one setup, one system that is out there with the maximum accuracy and with the least stop loss, I would say go for this. It will take some time to understand how it works, but it's one of the most simplest things that has been out there. So this is what an inside candle is. ये एक daily chart था. I hope that आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ. Is it clear? समझ आ रहा है आप लोगों को? Okay. So in this example, some people are right to notice. In this example, the volume didn't kick in. So if you are a person who adds too many filters, example है कि आपको हर जगह से confirmation चाहिए, then आपका ट्रेड यहाँ नहीं होता, because यहाँ volumes are not kicking in. But I would again say ideally volumes again should come back to above the 20 MA, or volume should again regain. So यहाँ पर इतना नहीं था. So breakout bar पे, just like any breakout, the volumes have to be good. So high volume will give, I would say, add more confidence to your trade. I will go on a Nifty chart. Intraday चलते हैं. Nifty bank 15 मिनट. I will show you 15 मिनट में how do you trade this, कैसे दिखता है, etc. So okay, कुछ examples ढूंढता हूँ. ये तो चलो मिस हो गया. Let me go in the last couple of days to find out. Okay, this is a good example. You can this way. If you look at the 7th, 8th of March, आप अगर ये time frame देखते हो, ठीक है? Look at this area, 7th and 8th of March. So, मैं just forget this inside candle concept. आपने एक चीज नोटिस किया होगा, कोई यहाँ पे this was the bottom of the market. आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि मार्केट ने बॉटम, मेरा सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट इसके पहले हर रोज गिर रहा था, राइट? मार्केट वाज फॉलिंग एवरी सिंगल डे बिफोर दिस, एंड मार्केट आ गया 15,700 पे आ गया. क्या मार्केट एक ही बार में रिवर्स कर गया था? सोच के देखो पॉइंट को. क्या मार्केट एक ही बार में रिवर्स करा था? नहीं किया था. बात को समझना.
इसीलिए इफ यू आर लिसनिंग टू माय कमेंट्री जो मैं देता रहता हूं, मैं इसीलिए बोलता हूं कि मार्केट्स हैव स्पॉइल्ड द चार्ट्स, मार्केट्स हैव स्पॉइल्ड द चार्ट्स, दे कंसोलिडेटेड देन दे रिवर्स्ड. सो अगर आपको अभी भी एक रिवर्सल चाहिए, एक चीज याद रखना, जब भी मार्केट, व्हेनेवर मार्केट गिव्स रिवर्सल्स लाइक दिस, दे आर ऑलवेज शॉर्ट लिव्ड. Maybe on the chart, if you look at a daily chart, आपको लगेगा रिवर्सल ऐसे हुआ है. But if you go on an intraday chart, you will see that 2 days markets did consolidate. उसके बाद ऊपर गया था, उसके बाद ऊपर गया था. So again, the same thing I would like to even link in today's market. आपका आज का चार्ट अभी भी ऐसे डाउन है, हमारा मार्केट अभी भी ऐसे गिरता है. So अगर आपको बुलिश बनना है, फोमो मत करो कि यार मेरे को यहाँ बॉटम पकड़ना है, फोमो मत करो मार्केट को. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. लेट अस से कल मार्केट गैप अप खुलता है, इवन इफ इट गैप अप नीचे गिरता है, इफ इट स्टार्ट्स टू डू सम बेस बिल्डिंग लाइक दिस, देन वी विल गो लॉन्ग ऑन द ब्रेकआउट ऑफ दिस, फिर हम लॉन्ग जाएंगे. बात को आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? so, ये चीज को रखना. हम लोग गलती यही करते हैं कि हम फोमो में लॉन्ग चले जाते हैं कि दैट मे बी वी हैव फाउंड द बॉटम, बट वो गलती अब नहीं करेंगे. वी विल लुक फॉर कंसोलिडेशन. जब वो ब्रेकआउट करेगा, देन वी विल थिंक टू गो लॉन्ग. दैट लेवल कम्स अप व्हेन अबव 37,000, अबव 17,100. वो लेवल्स का वेट करना जरूरी है. सो दिस आई विल टच दिस मोर इन द नेक्स्ट 15 minutes, बट जस्ट सिंस इट वाज आउट देयर, आई वांटेड टू शो इट टू यू. ओके, लुक एट दिस एग्जांपल. यहाँ पर यू कैन सी मार्केट्स हैव ब्रोकन आउट. यहाँ पे it is not so evident or very clear, but यहाँ पे you can see that after a breakout, market ने दो candles में halt किया. It did some halting for some candles and then finally again regain. This is a good example of an inside bar. I'll show a very easy example. Market ने देखो इस level को regain कर लिया and उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, did some halting on, यहाँ पे एक वो था, gap filling था, इसने gap fill किया, did some halting, and then again it broke out. If you are observing, market again broke out. When it broke out, it gave you this inside candle and then continued higher. So you can say this formation is an inside candle setup. What is your entry? Entry will be above this red line. What is the stop loss? It will go below this line. That is how you will enter. This was an inside candle. Hope you are getting it. Also, ये भी इनसाइड कैंडल है. अगर आप देखोगे यहाँ मार्केट स्टॉप किया, इट स्टॉप हियर फॉर सम टाइम, मार्केट्स ब्रोक आउट, gave a doji. Doji means what? After a breakout bar, doji मतलब एक halt candle है. And the moment this doji high breaks, you can clearly see this momentum has been captured. And this momentum was from 16,353 all the way to 16,420. मतलब 80 point momentum came. So you can say even this was an inside candle setup. Stop loss क्या आएगा? Below this candle. समझ रहे हो बात को? Is it getting clear? मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बिकॉज अभी कोई ज्यादा बड़ा इंटरेस्टिंग मूवमेंट मुझे दिखा नहीं है. दिस इज एन वेरी गुड एग्जाम्पल. इफ यू सी दिस, ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा था मार्केट में. मार्केट इज गिविंग यू अ ट्रेंड लाइन. मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया, इट गिव यू अ हॉल्ट कैंडल एंड देन इट गिव अ ब्रेकडाउन, एंड यू कैन सी आफ्टर दैट मोमेंटम कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड. दिस इज आल्सो कॉल्ड एन इनसाइड कैंडल. तो ये ब्रेक डाउन था, मार्केट्स ब्रोक डाउन. इट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन इनसाइड कैंडल. I'll show some more examples so that we never forget this for the rest of our life, because I don't want you to forget this for the rest of life. कुछ हुआ नहीं था ये last. I'll just show some good concrete examples. This is a good example. Market ने यहाँ breakout दिया. Again ये example देखो, 15 फरवरी मार्केट थोड़ा halt किया, halt करा, उसके बाद बड़ा move आया. तो jerk में move नहीं आया, बड़ा halt किया. And I just want you to just throw your eyes on this concept. एक बार ना जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और व्हाटएवर ऑफ दिस, कि मार्केट एक बार नीचे गिर रहा था, एक ओपन गैप अप, ये वापस नीचे गिरा. आई विल एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट वीडियो, बट जस्ट रिमेंबर दिस चार्टिंग. एनीवेज, अगेन लुकिंग एट द इनसाइड कैंडल कॉन्सेप्ट, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, ब्रेकआउट किया. यहाँ पर कुछ नहीं मिला. यहाँ पर देखो एक ग्रीन बार डोजी बना, उसके बाद गया. सो यू कैन सी बिग मोमेंटम केम इन. This is also called an inside candle. So is it clear now what an inside candle is, what is not an inside candle? समझ आ रहा है? किसी का डाउट है? Let me know. Otherwise, please say clear in the chat. Okay, I will take some doubts. I will just you can raise your hands. I will take your doubts. Please, Sakshi बताइए. Hi, can you please open 1 hour chart in Nifty? 1 hour chart in Nifty, हाँ जी.
So in today chart, so after the second candle, maybe we can say that it's an inside bar because the mother candle was even on the upper Are you hand. saying this one? This one? The second candle This one? on Yeah. 10 o'clock, today's market only. Yeah, it was an inside candle. Again, but one thing is this picture you are saying. I Yeah, will not say inside candle. Why? Because I will use this concept when I'm trading a breakout or a breakdown. So if you are saying कि market breakout कर रहा है, आप यहाँ पे क्या trade लोगे? Again, I would say that आपका जो आप सोच रहे हो आप सही सोच रहे हो क्योंकि आप ये कह रहे हो कि मार्केट में ये रेंज मैंने टूटी ये कह रहे हो yeah, because it broke downside, so inside bar is not necessary कि वो ऊपर या it can break down नीचे also I ना. was thinking about this. नहीं, that is fine, no problem. ठीक है, आप ठीक सोच रहे हो. मदर बार है और उसके अंदर एक कैंडल है फिर ये ब्रेक है, ठीक है. या निकेता बताइए प्लीज. Yeah, the doji candle need to be other colors only, जैसे कि red के बाद देखो, it will not make a difference. Doji by definition means low volume. So if on a doji candlestick it is green or red, it doesn't make a difference at all. फर्क नहीं पड़ता. and if there are multi bodies like this, these are not doji bodies. There are 3-4 मतलब good shapes bodies. This is not the ideal case. You know, for the sake of definition, it is fine, but not the ideal case. So what I would have wanted is, I would say, I'll just show you something on. So I would want this. ये अगर आप देखोगे difference देखो, साक्षी difference देखो थोड़ा मैं क्या दिखा रहा हूँ. मार्केट में अगर आप ये कंपेयर करोगे, दिस इज समथिंग आई वुड ट्रेड, बट ये मैं ट्रेड नहीं कर पाता बिकॉज यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम हॉल्ट या स्टॉल कर रहा था. यहाँ पर देखो एक ब्रेकआउट हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, ग्रीन कैंडल, हॉल्ट कैंडल एंड देन ब्रेक्स आउट. दिस आई कैन ट्रेड, बट यहाँ पे ये नहीं कर सकता. टू आंसर योर डाउट निकिता, इट डजंट मैटर इफ इट इज नॉट अ डोजी, एज लॉन्ग एज इट इज unmeaningful, non-meaningful candle, it is fine, but preferably dojis. Or preferably very very small. So how do I define small? It is very simple that they should not retrace too much. अगर ये कैंडल पूरा यहाँ तक रिट्रेस कर रहा है तो then there is some problem. So you can say that if a candle is just retracing till the 31.8 kind of percent mark, that is okay. अब यहाँ पर देखो जो ये कैंडल था, it has only come down till the 23.8% mark, तो ये चलता है. But it should not be the case that ये कैंडल पूरा यहाँ तक गया फिर ऊपर आ रहा है, फिर वो नहीं काम करेगा. Okay, the body need to be small and there should be only 2-3 candles. If there are 4-5 candles, then वो तो फिर रूल ऑफ थ्री आ जाएगा ना, तो वो डिस्कस करेंगे. राइट. okay. ध्रुव बताइए प्लीज. Two things. वो April वाला जो candle है on this chart only, towards the right hand side, yeah, वो wick के अंदर भी एक candle बन रहा है. Does that qualify for an inside bar? चलेगा ना, मतलब अगर आपको समझ आ गया तो ये भी इनसाइड बार आप कह सकते हो ना, बिकॉज अगर आप देखोगे, अगर आप इनसाइड बार नहीं भी बोलते हो, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, बिल्डअप Consolidation at the upper end. बात वही होगी ना. इट्स द सेम थिंग ना, डिफरेंट यू कैन से पोटैटो पोटैटो ना. बात वही है, आपका एक मदर बार है, उसके अंदर या अपर एज पे काम कर रहा है और ये ब्रेकआउट कर रहा है. सो आपका एसएल क्या आएगा? इन दिस केस एसएल यहाँ नहीं आएगा, एसएल विल कम ओवर हियर. ये जब ये चीज ब्रेकआउट कर रहा है ना मदर बार, एसएल आएगा आपका ब्रेकआउट बार का लो. ये एसएल है आपका. To add to this, अगर says there is a resistance line, उसके नीचे candle close होता है, the next candle, which is a small candle, is also closing below that resistance line, but is of a smaller size. The third candle crosses the resistance line with, say, high volumes, and it is a Marubozu. So, उसके लिए entry should be taken after the close of the candle or after that resistance line is. देखो इनसाइड बार में आई विल नॉट वेट फॉर क्लोज, बिकॉज अगर तो आप डेली चार्ट पे हो, इफ यू आर ऑन अ डेली चार्ट यू हैव टाइम, आप कर सकते हो. बट अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, आपको तो टाइम आज खत्म करना है, आपको आज ही ट्रेड करना पड़ेगा. सो टेक दिस एग्जांपल, चलो टेक दिस एग्जांपल. यहाँ पे एक ब्रेकआउट बार, मतलब एक मारूबोजू बनना, उसके बाद मार्केट ने एक हॉल्ट किया, यू कैन सी. अब मार्केट ने जब हॉल्ट किया, इसने आपको दिखा दिया कि यार ये लेवल पे कोई रेजिस्टेंस मिल रही है. सो मतलब अगर आपको बाय करना, बिकॉज हम बाय करते हैं आफ्टर दैट हॉल्ट कैंडल एंड ऑल ब्रेक्स, अगर आपको बाय करना तो आपको इसके ऊपर अब बाय करना पड़ेगा. यू कांट से कि मैं इधर बाय कर लेता हूं. अब जब आप इसके ऊपर मार्केट निकलना शुरू करेगा तो सेकंड यू को आप यहां बाय कर लोगे, ऐसे आपको लग जाएगा. ये मैं कह रहा हूं. एनी अदर डाउट, एनी अदर डाउट प्लीज आप पूछ लो.
आंसर सर मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, जैसे आज का दिन खोलना, हाँ तो कल का आप बेसिकली ये कह रहे हो कि अगर मार्केट फॉर एग्जाम्पल 17,050 पे खुलता है, बट फॉर एग्जाम्पल किसी रीजन से नीचे आ गया, बट अगर आज के लोग नहीं तोड़ता और 1-2 घंटा कंसोलिडेट करता है, तो वो बता रहा हूँ देखो